Good morning, boys. अलजीब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कल लेके देखा था। आज आगे करेंगे। अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में कुछ आज देख लेंगे आप, ठीक है। सब लोग नोट करना है अपनी नोटबुक में। मूव हो रहा है, लेफ्ट की साइड मूव होता है तो कितना डिजिट तक मूव होगा? 13 जीरो, ये 14 15, तो 10 पावर 15, ठीक है ना। इसको समझ लो। तो क्या है वो? 0 पॉइंट कितना जीरो है देखो, काउंट करो। 2 4 6 8 10 11 12 13 टोटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। साइंटिफिक नोटेशन हाँ, करके और आपने टोटल ऑलरेडी डिजिट जो है वो क्लास में 13 मैंने है। एक बार ठीक है, सिखाया था तो आपको। ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट में मूव हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट में मूव हो रहा है। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे मूव होता जा रहा है। ठीक है, तो पूरे कितने डिजिट मूव हो जाएगा? पूरे डिजिट मूव हो जाएगा, यानी 8 तक मूव होगा। 8 के बाद तक एक लास्ट डिजिट को छोड़ दो, यानी 8.5 इंटू 10 पावर -12 इसका आंसर आएगा। 11 तो जीरोस है, 8 को भी काउंट करना है, ठीक है, इसलिए। हाँ, राइट। अभी क्लियर दिखा है ना? 0.24671 इसमें भी 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, और 942 है, 942। तो इसमें भी उसी टाइप में आएगा, इक्वल टू 9.42 इंटू 10 पावर -12, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें 602 है, और उसके बाद कितना जीरो है? 2 4 6 8 10 और 13 जीरो है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो ऐसा नंबर जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए इतना लिखने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए ऐसे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय नीट नहीं ऐसा दिखाई ट्राई दे रहा करते होगा, हैं, मैं ठीक है, ट्राई करता हूँ दूसरा ताकि वीडियो जल्दी आपके इस लिए नंबर को लगाने का। जल्दी बोल सके। तो 13 तो इसमें जीरो है और ये 2 डिजिट है, तो पॉइंट इसमें है ही नहीं, यानी पॉइंट है ही नहीं, यानी लास्ट में पॉइंट है। तो वो राइट में इधर जो है मूव हो रहा है, लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है। लेफ्ट की साइड मूव होता है तो कितना डिजिट तक मूव होगा? 13 जीरो, ये 14 15, तो 10 पावर 15 रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। इसको समझ लो। एक 2 मिनट रुकते हैं। इसमें तुम लोगों को अच्छा लगे वैसा मैं एक टॉपिक निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को
अच्छी तरह से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपना फ्यूचर का क्लास में हेल्पफुल होएगा। अपने फ्रेंड्स को बुला लेना, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को बुला लेना बेटा। ट्वेंटी फोर वीडियोस फ्रैक्शन में आप लोग देखोगे, ठीक है? तो 24 वीडियोस फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है? तो इसको आप देखो, इस फ्रैक्शन को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करके उसको यूज़ करेंगे, multiplication वो table आपको 1 हर साल आने वाला 2 है, times. ठीक है? तो अगर ये आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप लोग अपने क्लास वर्क में ही नोट कर लेना, क्लास वर्क में ही नोट कर लेना इसको। Welcome friends, welcome to my maths class at GM Sarkar channel. Today you are going to learn how to और जैसे write the given ये आपको fraction पूरा होगा, in the हम आगे simplest इसका form दूसरा or the सम्स lowest करेंगे। form. कंटिन्यू आ जाएगा आपका, 45 मिनट्स पूरा क्लास चलेगा, ध्यान से Fraction सुनो आप लोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूज़फुल टॉपिक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में into कैसे कन्वर्ट करना, 8th स्टैंडर्ड में बिगिनिंग में ही आप लोगों को ये मैंने बताया था। simplest इसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें form रहेंगे किया हुआ, तो उसको हम देख लेंगे। or lowest form. सिंपलेस्ट फॉर्म को लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। Fraction into simplest or lowest form. So what is this process actually? The fraction is in the simplest or the lowest form if there is no other common factor in नोट the करो, इसको नोट करो, ये आपको यूज़फुल होने वाला है। नोट करो, और numerator जो क्लास में अभी मैं ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको फोटो and खींच के in भेजना the है आपको। denominator except अपने फ्रेंड्स को बुला लो जो नहीं आया वो। 1. So what is the meaning of this? A fraction in the simplest or lowest form if there is no Is other common factor the in the simplest numerator and if in the denominator form. except one। कॉमन फैक्टर Fraction is 1 in ही the होगा, simplest form उसके अलावा और कोई नहीं होगा। or in the lowest form if there is no other common factor in the numerator and in the denominator except 1. So what is the meaning of this? If you see, there is suppose fraction 2 by 3, then there is no common factor in 2 and 3 other than 1, because 2 is in one multiplication table 1 2 times and 3 is multiplication table 1 time. So 1 is the common factor of both 2 and 3. So this is the meaning of having the common factor 1. And suppose the fraction we take 2 by 4,
then we can see that both the fractions, both the numerator and denominator are divisible by 2. So in multiplication table 2 is 1 time and 4 is 2 time. So the simplest form is 1 by 2. Still we can see here in the 1 by 2 there is no common factor other than 1. So this is the simplest form we can say. And suppose we have 30 by 50, then we can see that both the numerator and denominator are divisible by 10. So in 10 it is 33 3 times and 50 5 times. So we have converted this into simplest form. And other than this number, suppose we have 24 by 36. So how for the beginning stage we see that 24 and 36 both are divisible by 2. So first we will divide them by 2. So the next form of this we will get is in multiplication table of 2 it is 24 2 times 12 times and 36 is 18 times. Still we can see that 12 is a multiple of 2 and also 18 is the multiple of 2. So both the numerator and denominator must be divided by the same number to convert in the lowest form. So again we can see that in 12 divided by 2 is 6 and 18 divided by 2 is 9. Then we can see again it is possible to divide both the numerator and denominator by 3, because 3 is the common factor of both 6 and 9. So it is divided by 3. So in 3 6 2 times and in 3 9 3 times. Now we can see that 2 and 3 will not have the common factor other than 1. So therefore this is the simplest form of 24 divided by 36, that is the fraction 24 by 36. Still we can have one more method for converting 24 by 36 into simplest form. First we will find all the prime factors of 24, so that again and again we should not go for this process. This is lengthy process. So at once we find all the prime factors of 24. First prime factor, it is divisible by 2. So it is 12 times, then in 2 again 6 times. Then in 2 table again it is 6 3 times and 3 in 3 1 time. So these are the prime factors of 24. So it can be written 2 into 2 into 2 into 3 in the numerator, and we will take 36 2 times 18, 2 table 36 18 times, then 18 into 9 times, then 3 times 9 and 3 in 3 1 times. So we can write 2 into 2 into 3 into 3. So both we can see that in the numerator and denominator the common factors can be cancelled. So this will get cancelled, 2 and this 2 will get cancelled, and 1 3 will be get cancelled. So the remaining we will find this 2 with this 2, 2 with this 2 and 3 with this 3. So the ultimate answer for this is 2 by 3. So this is one more method you can learn, and you can follow by this method. It will be easier for everybody, and then the prime factor also you can find in this method will be very much useful to get practice. So therefore this is the one of the finest method for finding the lowest term of the given fraction, lowest form of the given fraction. And we can still have some more example for
the fraction into lowest form or the simplest form, we can see write the following into the simplest form. Here we have 15 by 75. So the 15 and 75 both are divisible by 5. We can just find out what are the prime factors of 15 and 75. In 5 it is 3, in 3 table it is 5 times. So 3 5 is 15, directly we can write it is in 3 into 5 we can write, and still 75 also can be taken in 3 25, then 5 times and 5 one time. So we have 3 into 5 into 5, then 1 3 and 1 5 will go off. So in the numerator we are not finding any factor. So 1 is the factor for all the numbers, therefore 1 can be taken in the numerator, and in the denominator the remaining is 5. So like this we can have again that 16 by 72, we can find the prime factors for the 16, that is 2 into 2 into 2 into 2 we will get for the 16, and for 72 also we get like this. So it is 2 into 2 into 2 into 3 into 3, and we can see that 1 2. So the remaining in the numerator is 2, and in the denominator 3 3 are 9. So this is how we will do. Here we find that 17, the next question 17 by 51, we find that 17 is the prime number, and 51 it is divisible by 17 3 times. So it is 17 by 3 into 17. So 17 will get cancel, and it will be remain with 1 by 3. And like that 42 by 28 we can take 42 2, it is 21, then 3 it is 7, and then 7 it is 1 time, and 28 into 14 time, and 14 into is 7 time, and 7 is the prime number we can leave. So for 42 we can write 2 into 3 into 7, and for 28 we can write 2 into 2 into 7, and we can have 2 get cancelled and 7 get cancelled, so it is 3 by 2. Then 80 by 24, in 8 table if directly you can do, then 8 it is 10 times, and 8 it is 3 times. So both 8 will go off, it is 10 by 3. So like this also we can simplify, and we can identify which is the common factor for 48 and 60. So it is in 12 it is 4 times, and in 12 it is 5 times. So it is 4 by 5. And whenever we have multiple of 10, both the numerator and denominator, directly we can first write it is 15 into 10 and 6 into 10. Then we can write 15 by 6. Then in 3 it is 5 times, and in 3 it is 6 times. 2 times 6. Then 3 can be removed, and the simplest form is 5 by 2. So this is how we have to learn this in the beginning state properly, so that we can be very much frequent the bigger and higher classes. It will be very useful, the conversion of the fraction into simplest form. Keep watching the videos. Thank you friends. बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो
subtraction of like fractions. In the subtraction of like fractions, you are going to subtract 2 by 6 from 5 by 6. So it's very much clear that we have an object in which there are 6 parts: 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Out of 6 parts, 5 parts are shaded: 1, 2, 3, 4, 5. Parts and 2 parts. So this is removed and this is removed. So the remaining will be 3 parts. So this is 5 parts and this is 2 part is subtracted. So we get the remaining as 5 minus 2 by 6. Here 5 minus 2 by 6 equal to 3 by 6. So here the remaining is 1, 2, 3. This will become empty. So there are, in the same way, it is 7 by 8. Both are like fractions. So 7 minus 4 by 8, which is 3 by 8. And here you see 5 by 15 minus 2 by 15 is 5 minus 2 by 15, which is equal to 3 by 15. And here 18 minus 16 upon 20 is 2 upon 20, which is 1 upon 20. So this is, you have in the part of subtraction of like fractions. And next you are going to see the subtraction of unlike fractions. In the subtraction of unlike fractions, first you have to convert the unlike fractions into like fractions. We can see that the denominator of 3 by 4 and 1 by 40 are different. So these are unlike fractions, and the denominators are 4 and 40. So easily this 4 can be converted into 40. So first of all we must see which number can be converted into the same denominator, and after converting into unlike fraction into the like fractions, easily we can subtract. So this is 3 by 4. When you multiply by 10 you will get 40. So the numerator is also multiplied by 10. So it is 3 into 10 by 4 into 10, and here already you have 1 by 40. So in these 3 10 is 30 by 40 minus 1 by 40. So now you have converted into like fractions. Then in the denominator become it is 40, and it is 30 minus 1 is 29 by 40. So this is what you have in the subtraction of unlike fractions. First you have to convert the unlike fractions into like fractions, and then easily you can subtract. Here 3 by 5 in the next question, and minus 2 by 10 you have, which is you can see that 3 by 5 and 2 by 10, the denominators are 5 and 10. So this 5 can be converted into 10. So it is 2 times 10. So 5 into 2. Therefore 3 into 2 we have to take, minus 2 by 10. So 3 2s are 6 by 5 2s are 10, minus 2 by 10, which is 6 minus 2 whole divided by 10. 6 minus 4, 6 minus 2 is 4 by 10, which is in the simplified form you can convert 2 by 5. So this is what you have in the question. Next question is
5 by 7 minus 2 by 14. Again you can see the denominators are 7 and 14. So this 7 is converted into 14. So it is 5 by 7 into 2 by 2 minus 2 by 14, which is equal to 5 to the 10 minus 7 to the 14 minus 2 by 14, which is again equal to 10 minus 2 by 14, which is 8 by 14, and the simplified form is 4 by 7 in multiplication table 2. Both the numerator and denominators are divisible. So 8 divided by 2 is 4 and 14 divided by 2 is 7. And the next one, you have 6 by 11 minus 5 by 22, so which is equal to 6 by 11. 11 2 times 22 it become, so it is 11 into 2. In the numerator it is 6 into 2 minus 5 by 22, which is equal to 6 to the 12 by 22 minus 5 by 22, which is equal to 12 minus 5 by 22 is 7 by 22. In the next one, so this is what you have in the subtraction of unlike fractions. That's it in the subtraction of like and unlike fractions. In the next video you can see the multiplication of fractions. Thank you, friends. Download Amazon Prime Music today and listen to 70 million songs ad-free. Listen on the go. Two table. Welcome, friends. Welcome to Mahesh GM's channel. Today you are going to learn how to arrange the fractions in the ascending and the descending order. असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग In the ऑर्डर सीख group रहे हो of इस एग्जाम्पल में आप fractions, लोग ध्यान से सुनोगे, how बहुत to इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. arrange in ascending order. Now here we have in the first group 2 by 9, 2 by 3 and 8 by 21. The first step we have to observe whether the fractions are like fractions or unlike fractions. If all the denominators are not same, then the fractions are unlike fractions. So step 1, we have to convert the given fractions into like fractions. So to convert the given fractions into like fractions, we have to find the LCM of 9, 3 and 21. So what will be the LCM? Now we have to find the LCM. Easily we can find the LCM is the number which will be divisible by all these three. So the LCM of 9, 3 and 21 is 63. This we can find 9, 3, 21. The LCM 3 time, 3 1 time and 7 time. Then again 3, 1, 1 and 7, and finally 7, 1, 1 and 1. So 3 3 ja 9, 9 3 ja 9, 7 ja 63. So 63 is the LCM. Now 2 by 9 we have to convert in the fraction whose denominator is 63. So
we should multiply the denominator by 7, then we also multiply the numerator by 7. So 7 to 14. Then 2 by 3 in 3 table, we need to find how many times 63. So we can cover these 3. So we can easily find in 3, it is 7 3 is 21, into 3 will be 63. 3 into 21 is 63. So 2 by 3 into 21 by 21 is equal to 42 by 63. And 8 by 21, in 21 it is 3 times, so into 3 by 3, 24 by 63. So in ascending order, we have smallest number first, so it is first, it is second, and it is third. And in descending order, it is, this will be first, the biggest one, and this will be the second, and this will be the last one. Therefore, the ascending order is, first is 2 by 9, which is less than 8 by 21, which is less than 2 by 3. And the descending order is 2 by 3 is greater than 8 by 21, which is greater than 2 by. In the same way, we have to find the ascending and descending order for the second one. So the first step is to convert into like fractions, into fractions. So it is 1 by 5, LCM of 5, 7, 10. 5, 7, 10, the LCM is 2 table 7. So it is 70, the LCM is 70, the product of these three numbers. So 1 by 5 we have to convert in the fraction whose denominator is 70. So it is, when we close 5, 7 to the 14, 14 times, then 3 by 7, 10 times, multiply 30 by 70, and 7 by 10 is into 7, so 49 by 70. So the ascending order is, the smallest is 1 by 5, less than 3 by 7, less than 7 by 10. And the descending order is 7 by 10 is greater than 3 by 7 is greater than 1 by 5. So that's it in the ascending and descending order of the fraction. Thank you friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed to this channel, please subscribe the channel. I get to play the sport that I want to. I'm able to run a lot longer. इसका सिंप्लीफाइड आंसर लिख दिए. नेक्स्ट में मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है.
आज आप फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, ये सभी आप सीख चुके हैं। आज आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सीखेंगे। हमने देखा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके फिर एडिशन एंड सबट्रैक्शन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल फॉलो करेंगे ये आप लोग अभी ध्यान से सुनेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, when we multiply two or more fractions, we multiply the numerators, all the numerators, सभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक दूसरे के मल्टीपल हो, नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो हम उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में, उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के फिर फाइनली जितने भी न्यूमरेटर्स बचेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी डिनोमिनेटर्स बचेंगे उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका सॉल्यूशन जो है लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर n1 और डिनोमिनेटर d1 है, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर n2 और डिनोमिनेटर d2 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि ये फ्रैक्शंस ऑलरेडी जो है सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन ही है, हम ऐसा मान लेंगे कि ये सिंप्लीफाइड है और फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनल आंसर भी हमें एक फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं फाइनली। तो अब हम कुछ सम्स देखेंगे जो आपके सामने क्वेश्चंस बहुत सारे लिखे हुए हैं। अभी न्यूमरेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम देखते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर्स के मल्टीपल नहीं है, या डिनोमिनेटर के जो भी नंबर है न्यूमरेटर के मल्टीपल नहीं है। मतलब ये सब सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो फाइनली 4 1 जा 4 और 3 5 जा 15 लिख के हम लोग इसका सिंप्लीफाइड आंसर लिख दिए। नेक्स्ट में 8/3 इंटू 4/7 है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम 8 इंटू 4/3 इंटू 7 इक्वल टू 32/21 करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि 2/7 इंटू 7/9 है। एक न्यूमरेटर में 7 है और एक डिनोमिनेटर में 7 है, तो हम दोनों को जो है रिमूव करेंगे और बाद में जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो 7 को 7 से हम लोग रिमूव कर देंगे अभी और 2/9 उसमें बचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इंटू 6/8 इंटू 4 है, जो अभी 2 के टेबल में हमने कैंसिल किया, 6 को 3 टाइम और 8 को 4 टाइम। हम 6 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी एक कैंसिलेशन चलेगा। तो हमने 6 और 8 को कैंसिल किया है 2 के टेबल में 3 टाइम और 4 टाइम। अब जो भी बच रहा है देखिए 3 इंटू 3/4 इंटू 4, तो हमारा हो गया 9/16।
वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में 4/5 इंटू 12/7 में हम देख रहे हैं कि कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए अभी विदाउट कैंसिलेशन हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 12/5 इंटू 7 इक्वल टू 48/35। नेक्स्ट हम लोग 2/3 इंटू 1/5 करेंगे, इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, इसलिए ये 2 इंटू 1/3 इंटू 5 इक्वल टू 2/15 हमें मिलेगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल होगा और बचेगा 2/4, फिर वो कैंसिल होके 1/2 बचेगा और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 9 इंटू 3/5 इंटू 5 इक्वल टू 27/25। तो इस सीट में हमने देखा सारे सम्स अच्छी तरह से हमने समझ लिए हैं। अगली सीट में हम देखेंगे कौन से सम दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि जो आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 7 इंटू 3/5, 7 का डिनोमिनेटर नहीं है तो बाई 1, 7/1 लिख लेंगे इंटू 3/5। नेक्स्ट 7 इंटू 3/1 इंटू 5 21/5। अगले क्वेश्चन में 4 इंटू 1/3 होगा 4/3 फाइनल आंसर। और नेक्स्ट होगा 20/5 इंटू 4 या 4 इंटू 4/5 इंटू 20। 5 के टेबल में हमने देखा 24 टाइम्स, तो 4 4 जा 16 फाइनली बचेगा जो कि एक होल नंबर है। नेक्स्ट 13 इंटू 1/3, 13/3। नेक्स्ट 15 इंटू, अब हमने देखा कि ये 13/3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और पहले भी दो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिला है। तो क्वेश्चन को हमने देखा, ध्यान से पढ़ा, कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। फाइनली मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अब हम कर लेंगे सबको। 13/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे। 3 के टेबल में 12 4 टाइम, 1 रिमाइंड बचेगा बाई 3। सो इसको QR/D फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। QR/D कोशिएंट रिमाइंडर बाई डिवाइजर। हमने ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है इसका वीडियो एक आप लोग देख सकते हैं, जो पहले 12 वीडियो है फ्रैक्शन के, उसमें से आप लोग सर्च करके प्लेलिस्ट में होगा फ्रैक्शंस, उसको निकाल के आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्सन करना है। सो 4 1/3 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 13/3 का। वैसे 4/3 का 1/3 होगा, और इसके 21/5 के लिए 4 1/5 हम लोग इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेंगे। 4 1/5 यानी 5 4 जा 20 + 1 21/5 इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 15/3 इंटू 5। 5 के टेबल में 15 यहाँ 3 टाइम कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9 फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म होल नंबर है। नेक्स्ट 11/2 इंटू 10/3 प्रॉब्लम 6 में 11/2 इंटू 10/3, 11 इंटू 5/3 होगा 55/3, जो 2 के टेबल में 10 को कैंसिल करके 11 इंटू 5 55/3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 1 टाइम जाएगा 25, 2 बचेगा 25, 25 में 24 8 टाइम्स, 1 बच जाएगा 1/3 फाइनली बचेगा 18 1/3 इसका लोएस्ट फॉर्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3/2 इंटू एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 1/3 है, उसको हम लोग 16/3 लिखेंगे। 5 3 जा 15 + 1 16/3 होगा। नेक्स्ट 3/2 इंटू 16/3, 2 के टेबल में 16 हमने कैंसिल किया 8 टाइम,
और 3 × 8/3, फिर से 3 कैंसिल होके 8 बचेगा और फाइनल आंसर 8 है। अगले क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा, 2 4 जा 8 प्लस 3 11, 11/4 × 3। नेक्स्ट हुआ 11 × 3/4 33/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग अब चेंज करके लिखने वाले हैं 81/4। नेक्स्ट 3 4/7 × 3/5, 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7 × 3/5। अब 5 के टेबल में 25 कैंसिल होगा 5 टाइम, 5 × 3/7 15/7 विच इज 2 1/7। इस वीडियो में हम इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शंस का वीडियो जल्दी से हम लोग आपके लिए लेके आएंगे जिसमें डिवीजन सिखाने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बॉयज, आज के लिए हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। ऐसे जो भी वीडियो मैं आपको अभी भेजता हूँ उसको वॉच करो, नोट करो, समझ के एक बार लिख के देखो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी सीख सके और तुम भी सीख सको। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के सम्स करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। बाय बॉयज।